We have discussed about the first application of Lagrange equation, which is linear harmonic oscillator, and now second application is simple pendulum. Let angle theta between the rest position and deflected position is chosen as a generalized coordinate. If the string is of the length small l, then the kinetic energy of the system is given by half mv square. Here we have shown the simple pendulum, the length l, the mass of bob is small m, the rest the position in the position deflection is theta is given here in between OC and OB, and we can write the form kinetic energy as T equal to half mv square, where V equal to r omega. We know that V equal to r omega or r d theta by dt. It means r theta dot, but here r is equal to L, where r is length from the origin. So r equal to L, the length of string. So V equal to L theta dot. So T equal to half m L theta dot square, or T equal to half ml square theta dot square. Now in the incoming position from B to C, the mass falling freely through a vertical distance AC. The potential energy is given by, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो अभी जब वो ओ बी पर है, वो बी पोजीशन पर है, और जब वो सी पोजीशन पर आएगा तो बी से सी तक आने में वो डिस्टेंस ए से सी तक नीचे गिरता है, और इस नीचे गिरने में जो डिस्टेंस कवर की है इसने, उतनी डिस्टेंस के इक्वल उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. अभी डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? टोटल लेंथ है एल, हम ए तक की लेंथ निकालना चाहें तो ये वो होगी इस ओ बी का इस पर प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल, विच इज एल कोस थीटा. सो टोटल लेंथ एल में से हम एल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगा ए सी. सो वी इक्वल टू एम जी इंटू ए सी, विच इज ओ सी माइनस ओ ए. सो एम वी इक्वल टू एम जी इंटू ओ सी यानी एल माइनस ओ ए यानी एल कोस थीटा, और v इक्वल टू एम जी एल कोस थीटा. सो लैग्रांजियन l इक्वल टू t माइनस v, विच इज़ हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा. अपनी मेन प्रॉब्लम जो है वो लैग्रांजियन निकालने तक की है. आगे सॉल्यूशन सिमिलर है हर एक एप्लीकेशन के लिए. सो हम लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में इसकी वैल्यू रखेंगे एल की, डी अपॉन डी टी डेल एल और डेल क्यू जे डॉट की जगह यहाँ थीटा डॉट आ जाएगा, माइनस डेल एल और डेल क्यू जे की जगह थीटा आ जाएगा. नाउ डेल एल और डेल थीटा डॉट, ये हम इक्वेशन 3 से एल की वैल्यू पुट करें तो सेकंड टर्म तो थीटा डॉट से इंडिपेंडेंट है 0, और फर्स्ट टर्म का जो करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट. इसी तरह हम जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस एम जी एल साइन थीटा आ जाएगा. इनको हम पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन में, और जिससे एम एल स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट इक्वल टू प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0, और थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0. But if the angle theta is very small, then the sin theta is nearly equal to theta. So we can write as theta double dot plus g by L and into theta equal to 0, or equal theta double dot plus omega square theta equal to 0, where omega square is equal to g by L, or theta double dot proportional to minus theta, which is again
the equation of simple harmonic motion. So the time period is given by 2 pi by omega, or equal to 2 pi under root L by G, or frequency equal to 1 upon 2 pi under root G by L. So in this case, we have derived the formula for time period and frequency using Lagrangian equation, Lagrange's equation. Okay, thank you.